Hello students, I hope everybody is fine at home and keeping good health, obeying your parents and doing your studies regularly. So today let us go to the topic that we'll be discussing today, and that is articles. Okay. So one by one there are articles what you studied maybe in lower classes, and now you are in class 5. Accordingly there are some new things that we need to understand about articles. So one by one all points I'll be explaining. Now, you know which are the articles. I hope everybody knows which are the articles. That is a and the. Okay, a and the. So, we'll be discussing about these three articles separately in every one slide each. Let us start with the first article, a. What does a mean? It means anyone. कोई भी एक. ठीक है. When I am saying a boy, मतलब कोई एक boy. When I am telling a book, तो कोई एक book. A friend, तो कोई एक friend. So anyone, that is the meaning of a. Okay, so a means anyone, indefinite, not sure, indefinite article बोलते हैं a. It is not exactly telling कि भाई ये एक, no, कोई एक. So that is why it is, nothing is definite, nothing is sure. So that is why it is called a indefinite article, anyone. Okay, now what is the next thing we need to understand? We use before singular countable nouns that begin with a consonant sound. First of all, a will be used in front of countable nouns only. Uncountable nouns के सामने we will not use article a. ठीक है, water, milk, sugar, soil, ये सब के सामने, these are uncountable. We won't use a in front of or before these uncountable nouns. We will use only before countable nouns. Pencil, eraser, book, school, subject, month, day. So in this way we will use a only before the countable nouns. Okay, and that too singular countable noun. अगर days ऐसा बोला है तो a days it is not there. A day, months, a month, no, wrong, a month. Okay, so whenever the noun or countable noun is singular, in front of that we can use a. अब एक और चीज उसमें क्या देखना है, the sound or the beginning sound, the starting sound of the noun has to be consonant sound. You might have heard about vowel and consonant. Vowel is a, e, I, o, u, vowel, and alphabets में से a, e, I, o, u sound निकाल दिया. The rest other 21 sounds are called consonant sounds. So a is used with a consonant sound. Okay students, so here we are once again, we'll just discuss. A means anyone, indefinite है, कोई भी एक. Then it is used before only countable nouns and only when the countable nouns are in singular. Then a is used before consonant sound, vowel sound आएगा, a, e, I, o, u से निकलने वाला sounds होगा, तो we won't use a, we will use an. ठीक है, so a is used only with consonant sounds. Then we use words that begin. Now a is used with some words. कुछ words हैं जो e से और u से start होता है, vowel से start होता है. It begins with a vowel. A, e, I, o, u is a vowel. So there are some nouns which have e or u in the beginning of the noun, but their sound is not of e or u. Their sound is u sound है. U comes from y. Okay, u comes from the letter y, which is a consonant. तो इवन दो वहां पे e या u लेटर है, से लेकिन सिर्फ लेटर होना काफी नहीं है. द साउंड शुड बी वावल साउंड, बट इवन दो देयर इज e और u, द साउंड इज नॉट वावल, द साउंड इज कंसोनेंट. u साउंड आता है. जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स विथ u, वावल है, लेकिन यूनिवर्सिटी, सो द साउंड इज य. So it is a consonant sound. So we do not use an university, we use a university. Then uniform, yeah, you, isn't it? So that is again a consonant sound. So again we will use a uniform. Then European, यूरोप के जो लोग होते हैं we call them European, even though beginning with e, but the sound is European, you, yeah. So that is why
we can call these nouns, excuse me. So that is why we can call this letter, this word, even though it begins with a vowel, but we can call this as a consonant sound. So we will not use an, we will use only a European. Okay, then is used when we talk about a noun for the first time. पहली बार जब हम बोल रहे हैं, we are talking about something. ठीक है, I saw a boy के बारे में पहली बार बोल रहे तो a boy. I saw an elephant, or I bought a pencil or a pen. Okay, so पहली बार when we are talking about something, we will use the article a. Okay, so what all things did we study about a means anyone, कोई भी एक. ठीक है, a is used only with countable nouns, and that too when it is singular. A is used only for consonant sounds. ठीक है, there are some words which start with vowel but the sound is consonant, so we do not use an, we use a only, even though begins with vowel लेकिन sound is consonant, so we use a. Then a is used for nouns which is spoken for the first time. अभी हम एक कॉन्वर्सेशन में हैं, हम किसी एक चीज के बारे में बोलना शुरू किया, तो फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट दैट वी विल यूज अ, फिर आगे के टाइम में वी विल यूज द. ओके, सो फर्स्ट टाइम व्हेन वी आर टेलिंग अबाउट समथिंग वी यूज द आर्टिकल अ. So these are some things we need to understand about a. Let us go to the next article, that is an. An means what? An also means anyone, कोई भी एक. ठीक है, an elephant, कोई एक elephant. ठीक है, an apple, कोई एक apple. ठीक है, so an also has the same meaning. An also is used before countable nouns only. Countable nouns जो count कर सकते हैं, ऐसे nouns के आगे ही an also is used. An eraser, an apple. Okay, so we use an only before countable nouns, and that too when the countable nouns are singular. जैसे a था वैसे ही काउंटेबल नाउन्स है वो भी यूज होता है, यहाँ पे भी काउंटेबल नाउन्स के सामने यूज होता है. वहां पे सिंगुलर है तभी यूज होगा, यहाँ पे भी सिंगुलर है तभी यूज होगा. ओके, एंड देयर इज अ चेंज. a was used before consonant sound, but an is used before vowel sound. Okay students, so now vowel sounds में we will see vowel sound जब भी आएगा, vowel sound means a, e, I, o, u. Whenever there is a vowel sound we will be using an. Okay, then here also there is some exception. a में भी studied कि even though vowel से शुरू होता है लेकिन pronunciation consonant है तो हमने a use किया. Here also there are some exception. Even though consonant से शुरू होता है लेकिन sound is vowel, so we will use an. Okay, जैसे there are some nouns which starts with h लेकिन the h is silent. Okay, h is silent. For example, hour, we pronounce it as r. We don't say hour, ऐसा कुछ नहीं बोलते. We pronounce it as r. So r, h is silent. R, a is a. So it is a vowel sound, isn't it? Even though the first letter is h, even though it is beginning with a consonant, the word is beginning with a consonant, but the sound, starting sound is a vowel sound. Okay, because h is silent, excuse me, and that is why we will be using an, r. Okay, air, h-e-i-r, air मतलब जो किसी का गद्दी पे जो बैठते हैं वारिसदार बोलते हैं, that is called heir. Now for example, my son or my daughter will be my heir. मेरा सब प्रॉपर्टी का वारिसदार वो होंगे, so heir. So वहां पे hair नहीं बोलते हैं, we pronounce it as air. So h is silent, again a sound, vowel sound आया, so again we will use an, air. Then honest, h honest नहीं बोलते, we will call it honest. So o, again o, vowel sound, so an honest man. So here we can see that even though it starts with a vowel, there is a vowel in the beginning h, but the h is silent and the starting sound is a vowel sound. Okay, consonant से शुरू हो रहा है लेकिन the sound is a vowel sound, so that is why we use an. Okay, then here also like a, when we are talking for the first time about something, we will use the article an.
otherwise we will use the later on. ठीक है, जैसे अ पहली बार यूज करते हैं और कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है तो we will use अ, पहली बार किसी नाउन के बारे में बोल रहे हैं और वावल साउंड है उसका तो we will use an. Okay students, so these are the things that we studied about an. Okay, let us go to the next article, the. Now the meaning of the is changing. अ और an का मतलब क्या था? कोई एक, anyone. Okay, the का मतलब क्या? Exactly ये, this one, particularly, specifically ये एक, इसकी एक की बात कर रहा हूं. So that is the meaning of the. तो a और an was talking about anyone, so that they were indefinite articles, not defined. They did not tell exactly किसके बारे में. It can be anyone. So that is why they are called indefinite articles. But the, it tells about particularly anyone, and that is why it is called definite article. The is a definite article. Now when we use the is used जब एक ही किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बोलना होता है, देन वी यूज द. जैसे एग्जांपल में देखें, ईट अ बनाना. अ बनाना मतलब कोई एक बनाना, एक बनाना पड़ा है, कोई भी एक बनाना पड़ा है. ईट अ बनाना, एनी बनाना. ओके, ईट द बनाना. अब ईट द बनाना मतलब खास करके किसी एक बनाना के बारे में, दिस पर्टिकुलर बनाना. Okay, so that is definitely telling with this particular banana. So that is the difference between a and the. A and मतलब कोई है, the मतलब particularly, specifically एक. Okay, then we use a or an when mention a noun for the first time. When we speak that noun again, we use the. ओके, जैसे हम फर्स्ट टाइम जब कोई नाउन के बारे में कुछ किसी के बारे में बोल रहे हैं, स्टार्टिंग ही कर रहे हैं उसके बारे में, तो फर्स्ट टाइम जब उसका नाम लेते हैं वी यूज अ या तो एन, डिपेंडिंग ऑन कंसोनेंट और वावल साउंड. लेकिन आगे और जब लेते रहेंगे वी विल यूज द आर्टिकल द. फिर अ और एन नहीं लेंगे, वी विल यूज द आर्टिकल द. लुक एट द एग्जांपल, आई सॉ अ पैरेट. एक पैरेट देखा, सम पैरेट, आई सॉ अ पैरेट. ओके, द पैरेट वाज पर्च्ड ऑन द ब्रांच. अब आई सॉ अ पैरेट, पहली बार पैरेट का नाम लिया, कोई एक पैरेट, तो भाई एक पैरेट देखा मैंने, तो अ पैरेट. अब उसी पैरेट के बारे में वापस और भी बोल रहे हैं हम लोग, द पैरेट. नाउ इट डजंट बिकम अ पैरेट, नाउ इट बिकम्स द पैरेट. ओके, सो द पैरेट वाज पर्च्ड ऑन द ब्रांच, मतलब इट वाज सिटिंग ऑन द ब्रांच. Okay students, this is how first time when we tell about something we will use a or an, and then later on again when we are continuously telling about the same thing we will use the article the. Then the we use when we talk about particular noun even for the first time. अभी particularly किसी एक के बारे में बोल रहे हैं तो फर्स्ट टाइम में भी द यूज कर सकते हैं. अब खास करके किसी के बारे में भी बोल रहे हैं तो वो फर्स्ट टाइम हो तो भी हम द यूज करते हैं. अब जैसे कि ये मोबाइल पड़ा है, ये मोबाइल यहाँ पे पड़ा है, आई विल टेल समबडी ब्रिंग मी अ मोबाइल, मतलब कोई भी एक मोबाइल. लेकिन मैं अगर यही मोबाइल लाने को बोल रहा हूं तो व्हाट विल आई टेल, ब्रिंग मी द मोबाइल. Okay, I am telling for the first time, but still I will use the article the. So whenever we are using particularly someone, so we will use the article the. Okay students, now here we will be discussing where are we going to use the. हमने डिस्कस किया था कि where we will be using a and an, वो तो हमने डिस्कस कर लिया. एनी वन जहां पे भी है, वावल साउंड जहां है तो an आएगा, कंसोनेंट साउंड जहां पे तो a आएगा. But now we are going to discuss where are we going to use the. The में first famous buildings, अभी famous buildings है तो we will be using the, that is Taj Mahal, the Taj Mahal, Gateway of India, the Gateway of India, Qutub Minar, the Qutub Minar, Taj Hotel, the Taj Hotel. So particularly when we are telling about someone, then we use some famous building. हम किसी famous building का जब नाम लेते हैं तो we use the before those names. Okay, then whole class of animal. अभी वर्ल्ड में जितने भी लायंस हैं उसके बारे में मेरे को कुछ बोलना है तो आई विल से द लायन. द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. मैं किसी एक लायन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लायंस है उसके बारे में बोल रहा हूँ. होल क्लास ऑफ लायंस. द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. द एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल. द ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल, isn't it? So in this way whenever I am telling about the whole class, पूरा वो सारे animals के बारे में कुछ commonly अगर मैं बोल रहा हूँ I will use the article the. Okay, then river, seas, ocean, gulfs, bay, mountain ranges, ये सब के आगे भी the. river, the Ganga, the Narmada. sea, the Indian the Arabian Sea, the Mediterranean Sea. Oceans, the Indian Ocean, the Pacific Ocean.
फिर gulfs, the Gulf of Khamba, the Gulf of Kutch, isn't it? Then bays, the Bay of Bengal, isn't it? फिर mountain ranges, the Himalayas. So whenever we are taking names of river, sea, ocean, gulf, bay, mountain ranges, excuse me, we'll use the before their names. Okay, then names of newspapers, the Times of India, the Hindu, the Indian Express, isn't it? So whenever we are telling the names of the newspapers, uske pehle bhi we will use the. Then names of aeroplanes, trains and ship, the Shatabdi Express, the Titanic, the Lufthansa, isn't it? So the Boeing 707. So whenever we are telling about the name of an aeroplane or a train or a ship का नाम लेते हैं, उनका particular नाम है, उसके पहले भी we will use the. Okay, then some countries, कुछ countries है short form में जिनका नाम होता है, उनके आगे भी we will use the United States of America, the United Kingdom, then the United Arab Emirates, okay, the USA, the UK, the UAE, okay. Then group of islands, islands, you know, a land which is covered by sea on all directions, that is called island. ऐसा बहुत सारा islands का group होता है, that is called group of islands. ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का जब नाम लेते हैं उसके आगे भी द होता है, द अंडमान एंड निकोबार, ओके, द लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो ऐसा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के पहले भी वी विल यूज द. ओके, देन celestial bodies. Celestial bodies means bodies which are in the sky, sun, moon, star, Jupiter, Mars, the sun, the moon, the Jupiter, the Mars, the earth. So these celestial bodies का नाम के आगे भी we will use the. Okay, then holy books, the Gita, the Ramayana, the Mahabharata, the Quran, the Bible. So in before the names of the holy books also we will use the. Okay, then there are some more titles. Prime Minister of India, the Prime Minister of India, the